Ladies and gentlemen, welcome one final time to the India Today Conclave 2026, where after the magic of the Indian cricket stars who shone so brightly on the World T20 stage, we have someone who shone brightly on Bollywood stage for 30 years and more. It's the ultimate theatre of dreams, but many dream but few make it big. Our guest today, in a sense, is the original outsider. Someone with no film background, who's risen to the very top of Hindi cinema's insanely competitive ladder, and importantly, stayed there for over 3 decades. It's Khiladi time, folks. It's also time for Bhoot Bangla and all the wonderful films that he's made over the years. You can see the images around you. Please welcome the one and only Akshay Kumar. भूत होते हैं? There are ghosts. क्या लगता है आप लोगों को भूत होते हैं? अगर जिन जिनको लगता है भूत होते हैं, हाथ खड़ा कर लीजिए. भूत होते हैं. Really? That's quite a lot of people. I thought there'd be far fewer. But have you experienced, Rajdeep ji? Have you ever experienced कोई भूत? There was one night when I saw... Politics की बात नहीं कर रहा हूं मैं. If you're identifying नेताओं with भूत, नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूं. मैं I'm not identifying any. वैसे तो हर प्रोफेशन में बहुत सारे भूत होते हैं. बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री में बहुत भूत हैं. बिल्कुल. You can name them if you want. No. There was one night when there was this dark apparition in my room, and I actually thought there was a ghost. Turned out to be just a curtain which was moving. But you tell me, you're the one who's supposed to answer. भूत होते हैं? Actually, मैं एक छोटी सी किस्सा सुना देता हूं. मेरे साथ नहीं हुआ था. मेरी वाइफ, हम जहां पहले अभी मैं जूहू पे रहता हूं, उससे पहले मैं कहीं और रहता था, तो उस घर के अंदर माय वाइफ यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि यू नो देयर इज कुछ तो है यहां. एंड माय सन वाज अबाउट 4 or 5 years old, and I used to say कि टीना, व्हाट आर यू टॉकिंग? मतलब कुछ तो समझ यार, तू पढ़ी लिखी है, कैसे क्यों बोल रही है? सो शी यूज्ड टू से, नहीं, आई एम टेलिंग यू, देयर इज, आई हैव हर्ड अ लेडी वॉकिंग, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज एक्चुअली, मतलब भूत का मेरा एक ही बार एनकाउंटर ऐसे हुआ था. एंड आई यूज्ड टू नॉट बिलीव. एंड वन डे माय सन वाज लाइंग, एंड सडनली ही पॉइंटेड आउट एट, मतलब दूर कहीं, और बोलने लगा, नहीं इधर मत रहो, यहां से जाओ. एंड आई एम वंडरिंग, हूं किससे बात कर रहा बेटा? नहीं, आप जाओ, इधर मत रहो. एंड लिटरली फॉर 2 seconds, you know, even मैं भी हैरान हो गया था कि, and she kept on saying, I'm telling you there is somebody. See, even your son is talking to someone. There is something, some kind of a, I don't know what it is, but I presume होते ही होंगे. I presume there must be some supernatural power or something must be there. Some energy is there which is always there. वैसे भी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके इर्द गिर्द अच्छाई घूमती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके इर्द गिर्द बुराई घूमती है, तो कोई ना कोई एनर्जी जरूर रहती है. What is the secret of Akshay Kumar's energy? Can't be the supernatural. Something that you've done that has made you this energetic star for more than 30 years. I'm looking at some of those images. Some are from the early 90s. 2026, you're still doing 4 films a year. Yeah, energy. Where's the energy coming from? देखिए, मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं 4 फिल्में करता हूं. बिल्कुल करता हूं क्योंकि मेरे पास बहुत वक्त है. साल में 365 दिन होते हैं. 365 दिन के अंदर अगर मैं आपको, जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे ज्यादा छुट्टियां लेता हूं, और मैं फिल्म जो करता हूं, जब करता हूं, उसकी रीडिंग जो है, before making starting the film, I do at least about 100 times, maybe more than 100 times I read the script. And that is why the flow of the film goes very fast. Maybe my films must be finishing in 50 days, 55 days. And that is why I can succeed in doing, in 200 days, I can succeed in doing
4 films, and I take Sundays off. मतलब मैं हमेशा करीबन हर 3 महीने बाद 7 दिन की छुट्टी लेता हूं. एंड मैं ये आपको बोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा करें. राजदीप जी, आपको मैं कह रहा हूं. So let's count. Okay, I'm taking 100 and you want me to take 120 days off. 120 days. Don't work on Sundays. I'm don't sure work on they all dislike me at the moment. जो bosses हैं यहाँ के इंडिया टुडे के. ना यही मुसीबत होती है यार. But we can change places. Why don't you become the news anchor who has to do all the breaking news? And I'm very happy to take your position मैं जिंदगी में and stay in Maldives one day and in the presidential suite the next. मैं जिंदगी में खुश रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं जर्नलिज्म में नहीं आना चाहता. मैं खुश रहना चाहता हूँ. You also, among the other things that you do, wake up at 4:30 a.m. in the morning. What do you do when you wake up at 4:30 a.m. in the morning? मैं 4:30 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ. Basically, that is the only time when I am all alone. My wife is sleeping, my children are sleeping, and nobody is awake. Even the guard is sleeping. And so I just come out in the garden. I have a lovely garden in my building. So I just keep on walking there. And sometimes I just jump the wall. There's a beach in front of my house. So I just go on the beach. I just walk. इतनी सुबह सुबह होती है कि यहाँ तक कि there are dogs, but they are also sleeping. So I'm the only guy who's awake, and I just walk around for 1.5 hours. I just walk. I just maybe think. I just talk to myself. I listen to music. I listen to Hanuman Chalisa, and but these are the things I do. And then I go to my gym and start working out. You know, that's quite incredible, because once you're on the screen or once you're on the set, as I said, you have this remarkable energy that made you an action hero through the 90s, who then reinvented himself almost as a comic hero. So it almost seems as if there are two Akshay Kumars, one who zealously guards his privacy. We don't see too many pictures of your other life, occasional Instagram reels, and I'm going to play some of them. But the rest of the time, once you're on set, are you a completely different person? No, I am what I am. I'm what I am at home. I love comedy. मुझे हंसी मजाक बहुत अच्छा लगता है. मुझे कोई jokes भेजता है, मुझे अच्छा लगता है. I like to laugh. I like to smile. I like to make people laugh on set also. मैं हमेशा हंसी मजाक करता हूँ. मुझे कभी भी serious नहीं रहना. I hate being serious, and I hate anything which can curb me and make me silent or anything. I just don't like it. I like to live my life to the fullest. That's all. Do you ever pinch yourself in the night and tell yourself, "Yaar, I was this guy who perhaps had very little chance of making it so big in Bollywood. You did a small film in '87 where you didn't even have a speaking role, I think, playing a marshal." I had a 20-second role. 20-second role. From a 20-second role to becoming this big star, do you pinch yourself? How did this all happen? Pinch myself, मतलब Do you think कि यार ये कहाँ आ गया मैं? मतलब मेरी जिंदगी में मैंने हमेशा I have always flown like water. I've kept my life like water. I have always, जैसे I'll tell you, long time, I'm a huge Bruce Lee fan. And Bruce Lee always says, if you put water in a cup, it becomes a cup. If you put water in your hand, it becomes this kind of a hand only. So just be like a hand, or just be like a water. Just keep on flowing. Wherever things has to take you, it will take you. Whether if it is high tide, it will take you fast. If it is low tide, you will be going slowly. If it is still, no problem. It will remain still for a while. I have never planned anything. मैंने हमेशा अपने आप को छोड़ा है और अपने आप बहुत सारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारी बार बहुत सारे फ्लॉप्स भी दिए हैं. मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त आ गया था कि मैंने 16-17 फ्लॉप साथ में एक साथ दिए थे. मतलब लेकिन
मैं गर्व से कह सकता हूं मेरे पास फिर भी काम होता था। मेरे पास उस वक्त भी 4-4 फिल्में होती थी, 5-5 फिल्में होती थी, क्योंकि मैं हमेशा आई बिलीव डिसिप्लिन इज द वन ऑफ द मोस्ट की थिंग। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल पीपल जो इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है आप अगर एक्टर 19-20 हो जाओ फिर भी चल जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन जरूर रखना। बी अ प्रोड्यूसर्स एक्टर। सो देयर आर फ्यू formulas which I have always followed, which I learned at a very early age. So that is how I have been doing things. Does that, we were just playing shots of you bare-bodied. Yeah, I saw that, yeah. You're the original six-pack man. All these other guys have tried to put a six-pack. You're the original. Not even, you're... I still don't have six-pack. एक बात बताता हूँ राजदीप जी, six-packs ऐसे नहीं मिलते. You have to literally work for 12 years to get a proper six-pack. यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं जो six-pack बनाते हैं, that is all been created. I'm not talking about VFX. Some are VFX. Some are created by putting wrong things inside your body, and which I don't want to get into that. But the natural way is our Indian way of making six-pack, and वो भी है proper हिंदुस्तानी तरीका काम करने का, प्रॉपर घी खाओ, अच्छी जिंदगी जियो, खुश जियो, and you can manage it, but it cannot happen. I have seen six-pack happening in somebody's body in about 4 months, 5 months, but that is all wrong. So how do I get a six-pack? How do I get a six-pack now? How long should I be working in the gym to get a six-pack? राजीव जी फिलहाल तो आप जस्ट फैमिली पैक थोड़ा हटा दीजिए, सिक्स-पैक बाद में आ जाएंगे. ठीक है. लेकिन I just met you up with me, and I must tell you, he has maintained himself very well. I'm very impressed with you. At this age, you have managed. I know what you went through and how you have managed it so well. You have done a tremendous good job on yourself. Thank you, Mr. Akshay Kumar, for that. I shall tell my wife and get some extra brownie points for doing that today. But I wanted to ask you this, and this was part of the conversation we had when we were just chatting earlier. I recovered from prostate cancer last year. Akshay told me his father died of prostate cancer at the age of 67. And then said something to me which struck a chord. Akshay, you want to tell this audience that, because I think it's important that someone like you, who's this mass hero, tells people just what you went through, but more importantly, what's your little piece of advice for the people out there? See, I lost the most important person of my life, my father. मैंने बहुत at the age of 67 जब थे, मैं ये बात कर रहा हूँ 2000 की, I lost him. He was everything to me. And और क्यों पता है? क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि after the age of 50-55 you have to get your PSA checked. And I want to tell you, जितने भी यहाँ पे आदमी हैं, जितने भी लोग सुनने वाले हैं, हमें इस बात का एजुकेशन नहीं मिला था कि PSA चेक कराना हर आदमी के लिए हर साल बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तभी मैंने राजदीप जी से कहा था अगर हो सके तो ऑडियंस को जरूर बताना. जितने भी लोग हैं जो आदमी हैं जो 50 साल के ऊपर जा चुके हैं, प्लीज अपना PSA जरूर चेक करवाएं. बिकॉज दिस इज वन थिंग, prostate cancer is after every third person a man has prostate cancer. So please check it. It's a very important thing to do that. You can save your life. You can save not only your life, you can save your whole family's life. That's it. Okay. And remember, once a year, Akshay goes to get his complete checkup along with Twinkle. Let's talk about happier things. I've often wondered, you and Twinkle at the dinner table, who wins the argument? Obviously Tina. Obviously her? Obviously Tina. Why? क्योंकि मैं विश्वास रखता हूं चुप रहने पे. चुप रहना बहुत जरूरी है. You have to be a very good listener. Silence is golden. Listen to the other person. बहुत सारे
That's the way I have followed my life with my dear wife, and I've done this not only with my wife, also with lot of times with my producers, also with lot of time with the media, also with talking to journalists. Also, I talk very less and to the point. That's it. I want to play some videos of your Instagram videos. One was a video on one of your wedding anniversaries where you had got a bit of a warning, I'm told, by your mother-in-law. This is the other one. The best part of our marriage, we encourage each other to fly. You all were bungee jumping. But there's another video where Twinkle does an Instagram reel. And this is apparently on your anniversary date. And what is she trying to do? I mean, how do you handle her then? No, but there's, please, if I can tell them to play the song which is going Can on. you play the song? There's a song associated with. Okay, we'll try and play that song, which is Ramba Ho. And she's singing to Ramba Ho in that song. Akshay, how do you handle Twinkle apart from, you just stay silent? She doesn't know M of martial art. She doesn't know. And this was a very kind of a martial art pose which she has done. So, I mean, what's the secret then? What's your secret sauce? She's got views which are presumably, at least the public thinks, her political views are very different from yours. Yeah, absolutely. You see, you are identified in a way as a right-wing Modi supporter. She's identified as relatively left liberal. मेल कैसे होता है? देखिए, करंट तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चाहिए, तो तभी तो आपके यहाँ बत्ती जलती है, वरना हम सब अंधेरे में होते हैं। तो इसीलिए हमारे घर की जो बत्ती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों मिलके ही घर को उजाला रखते हैं। अरे वाह! You talk politics at the dinner table, or what do you talk about? नहीं, हमने करीबन ना करीबन 4-5 साल पहले, 6 साल पहले छोड़ दिया। Stop talking politics. बस हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, नहीं बात करने। Okay, no politics. आप घर पे लेके जाते हो पॉलिटिक्स? Don't even ask that question. Let's not even go down that route. क्यों नहीं? No, I'm not even going down that route. We can discuss that offline. मैं भी तो सवाल पूछ सकता हूं आपसे। ऐसा तो कुछ नहीं है। It's a conclave, India Today conclave, not India Today slave. कि आप ही पूछेंगे। Good point. Well done. Akshay 1, Rajdeep 0. Okay. Let's talk about films. You talk about films because, I just want to, for a moment, you're coming in Bhoot Bangla back with Priyadarshan. One of the excitement is that you're back with a director with which you've done a lot of hits. Is that very important for Akshay to have those directors? Because I find it fascinating. You've done these various films that have had sequels. You create the Khiladi franchise. You create a Hera Fairy franchise. You create a Houseful franchise, often with the same directors. Is that been very important in your success, that you've got these 4 or 5 directors you're comfortable with and you enjoy doing films with them? Sir, I'm gladly saying it. I have worked with I've done 150 films. मैंने करीबन ना करीबन 60 से 70 डायरेक्टरों से काम किया है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही के साथ करता हूं, लेकिन प्रियदर्शन साहब जो हैं, उनके साथ एक ट्यूनिंग है, बहुत अच्छा मजा आता है, और उनके जैसा उनसे मैंने बहुत सारी कॉमेडी सीखी है, राजकुमार संतोषी इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्टर्स जिससे मैंने काफी कुछ सीखा है। देयर वाज another director, late writer नीरज वोरा. These are the 3 people. अगर मुझे कॉमेडी का सी भी आना शुरू हुआ है तो इन तीनों की वजह से हुआ है। It is not often that an action hero transitions, as I said, into comedy. जी. What is the secret to being a comic actor? And did you feel at any stage that, I'm this action hero, everybody recognizes me for what I did in the Khiladi franchise, for example? Where am I getting at all into the comedy genre? I mean, the 60s and 70s, you'd have the occasional comedy film, but it was led by a comedian like Mahmood. Now you've got mainstream actors who are leading the way in comic films. Do you believe that's something that you're completely comfortable with? And what is that secret to be a good comic actor? Is it timing? Is it just the way you work with people? See, राजदीप जी, कॉमेडी जो है ना,
वो सिखाई नहीं जा सकती, वो अपने आप अंदर से आती है, आपको समझ अपने आप आने शुरू हो जाती है। क्या है, वैसे भी मैं आपको बताऊं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, किसी आदमी जो कॉमेडी करता है, आप कभी भी देखोगे उसको बेस्ट एक्टर का रोल, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी नहीं देते उसको, दे डोंट कंसिडर इट ऑल्सो। जबकि जितने भी बड़े से बड़े एक्टरों को पूछ लो, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है कॉमेडी करना, किसी को हंसाना। रुलाना, आपको सिचुएशन रुला सकती है, आपको आंखों में आप नमी डाल के, ग्लिसरीन डाल के रो सकते हैं, लेकिन कॉमेडी जो होती है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। एंड अनफॉर्चुनेटली इट नेवर गॉट इट्स ड्यू, नेवर। आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनी अवार्ड जहां पे बोलते हैं कि बेस्ट एक्टर जिसने पूरी पिक्चर कॉमेडी की हो और उसको दिया हो। So you feel that Hindi cinema has been unfair in a way to that entire genre of comedy, which has now come into its own because you've made such blockbusters with comedy. That's really happened in the last 20 years. I'm telling you, just see it. आप खुद ही just be the judge. आदमी कोई रोमांटिक फिल्म करता है तो आप थोड़ी उसको बुलाते हो द बेस्ट रोमांटिक हीरो, यू कॉल हिम द बेस्ट एक्टर अवार्ड, यू गिव इट। बट कोई कॉमेडी करता है पूरी पिक्चर के अंदर, उसको आप कभी नहीं बोलते, उसको एज अ कॉमेडियन देते हैं, एंड विच इज अ वेरी सैड पार्ट। And next time if you ever meet any actor, please ask them what is the most hardest genre. They will all say comedy. किसी को भी आप पूछ लीजिए। Do you feel therefore sometimes that you've not been given your due, the awards which could have come to you for, you've been stereotyped in a way and therefore you've not got the kind of awards, even though you've made all these hit films that, let's say, a Shah Rukh or others in your same period have got? No, I gave up long back. You gave up? I gave up long back. I found the rewards were more interesting than awards. What are the rewards that, what thrills you? Is it a box office hit? और It's a कोई box आपको office रास्ते hit. पर मिलता है और कहता है यार अक्षय, that was a fantastic performance? वो भी है, सबसे ज्यादा जरूरी है जब कोई बोलता है कि यार मुझे कितने लोग कहते हैं कि यार हमने तेरी फिल्म देखी, मेरा जो बेटा है वो कॉमेडी फिल्म देख के बिना अगर वो फिल्म नहीं देखे तो वो कभी खाना नहीं खाता। It's basically that kind of a thing. Obviously the film which I'm talking about is also hit films जिसके अंदर you get a lot of money also, and so I consider myself a commercial actor who is more happy doing all that. But you know, you've actually transited a very interesting era in Indian films. When you first came in, there was the single screen dominance. Then we went into the multiplex era. Now everybody is watching cinema on OTT, on even their mobiles. Do you believe as a result the emotional expectations of Indian audiences from a hero have fundamentally changed? The hero has become something very different to what he was, let's say, in the 70s and 80s, the era of the big superstars, the Rajesh Khannas, then the Amitabh Bachchans. Is it a very different definition कि कौन superstar है? Because you've stuck to big screen more often than not. So what are you asking me? I'm asking you, how different is today's hero from the heroes of that generation? See, film industry is like a circle. It keeps on changing. After every 2 years, 3 years, everything changes. The concept, our audience, they keep on changing what they want. आज Indian खा लिया, कल Chinese खा ली, परसों Italian खा लिया. Everything changes after every 2 years. अब मैं बोलता हूं जैसे कि आप धुरंधर को ही ले लो. एक पूरा एक्शन फिल्म है, पूरी फिल्म है, खून खराबा है, बढ़िया है, लोगों ने they have lapped it up, they have enjoyed it, and एक हीरो आता है रणवीर सिंह जो कि फुल्ली एक्शन करता है, एकदम छाती तान के एक्शन करता है, कंप्लीट वेरी एंग्री यंग मैन का एक काइंड ऑफ थिंग इमेज ही टेक्स इट. जबकि ये बीच में बंद हो गया था. मैं अब आज से करीबन 5 साल 6 साल पहले की बात कर रहा हूं. सोशल फिल्म्स जो मैंने सोशल फिल्में की थी, चाहे वो टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, पैडमैन हो, वो बहुत चलती थी, ऐसी फिल्में बहुत चलती थी. सो एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग. अब हॉरर कॉमेडी का टाइम आया है.
लोगों को हॉरर कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है, स्त्री चली. सो एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग. वी डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू लाइक नेक्स्ट. You just mentioned Durandar. When you saw it, I presume you've seen it, and you saw Ranveer play that role. Did you think, yeah, I could have also been part of the Liari gang? मुझे भी ये picture करनी थी. I mean, you're suited for it in many ways. But I don't think Aditya thought that. I don't think he thought it, so I didn't get it. Regret? Yeah. I mean, if you see some other person play that role, which you think maybe you could have also played, is there a sense of regret? Or is it just the way the world is? Okay, are there any insecurities, anxieties still See, after all these years? many times I meet Ranveer. He looks at me and he says, यार क्या रोल खेला तूने, वो क्या फिल्म थी तेरी, आई विश यार मैं भी करता. तो ऐसा होता रहता है. मतलब कोई फिल्म में वो करना चाहता है, कोई मैं करना चाहता हूं, लेकिन जिसको, हाँ देखो सर, हम लोग करीबन 15 से 20 एक्टर्स हैं, और हिंदुस्तान में करीबन इंडियन फिल्म जो है, हिंदी फिल्म जो है, 180 फिल्में बनती हैं. तो सबके पास रोल है. तो रिग्रेट मतलब आकाश मुझे भी मिला होता, बस वहीं तक होता है, लेकिन जलन नहीं होती. Jalan nahi hoti. Jalan nahi. Do you think that that's one reassuring? Because there was in the 70s, there was to be कौन number one hai, who's bringing out the biggest hits. We've actually framed this discussion as the hit machine. Is it still competitive at that level to decide who's number one, or these numbers no longer matter in today's cinema? देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये महालक्ष्मी घोड़े जहां दौड़ते हैं वहां अच्छा लगता है. यहां नहीं अच्छा लगेगा. वहां समझ में आता है कि नंबर 9, नंबर 1 आया. तो वो हम घोड़े नहीं हैं, हम एक्टर हैं. हमको अपना बहुत काम मिल जाता है, बहुत काम करते हैं. एंड ये जो है ना मेंटालिटी ऑफ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की, ये मेंटालिटी से आप अपना संतुलन खो बैठते हैं. आपको खुशी नहीं रहती. आपको यही स्ट्राइव करते रहते हैं कि मुझे बनना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है. और उसके अंदर कभी कभी आपका संतुलन खो बैठता है, कभी कभी आप कुछ गलत काम कर जाते हैं. बेस्ट है कि आपको जो काम मिल रहा है, जैसे मैंने कहा, पानी की तरह तैरिए, बस पानी की तरह रहिए. आपकी जीवन में अच्छी बात करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, बस जिंदगी आपकी बहुत प्यारी निकल जाएगी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. आप हैं अच्छे आदमी for a few reasons, and I want to put that out. We did a story on this a few months ago on India Today. Akshay Kumar decided to set up a fund, correct me if I'm wrong, that would provide insurance to the Stuntman Association of Bollywood. And I thought that was fantastic, what you did. I mean, these are the little facets that matter. Does that come spontaneously? You're also, of course, you were for several years the highest income tax payer in the country. But I just thought that you were giving back to the industry by actually setting up this insurance for stuntmen. Does that come spontaneously? Where does that part come? सर, ये जो पार्ट है ना, मैं जब अपना करियर शुरू किया था तो मुझे काम मिलता था बिकॉज मैं बहुत अच्छा एक्शन करता था. कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी हेलीकॉप्टर हो, कहीं से भी जंप मार रहा हूं, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे कूदना हो, किसी को 15-20 घूंसे लात ये मारना हो, तो मुझे बोलते थे. एज एन एक्टर मुझे लेते थे. मैं सारे स्टंटमैन को, सारे कोरियोग्राफर्स को जानता हूं, सब स्टंटमैन को बाय नेम जानता हूं. मैं अपने आप को स्टंटमैन पहले समझता हूं, एक्टर बाद में समझता हूं. और मेरा काम, मेरा धर्म यही कहता है कि मुझे उनका ध्यान रखना है. आज उनको कभी चोट लगती है तो उनके पास पैसे तक नहीं होते कि वो अपनी टांग ठीक करवा ले या अपना हाथ पे जो चोट आई है. ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो उनकी जान चले जाती है. मेरे सामने 2 स्टंटमैन मर गए थे, मतलब, और उस एक की तो नई शादी हुई थी. एंड दे आर डूइंग इट फॉर हु? सो दैट वी लुक गुड. और हमारा अगर हम इतना भी नहीं कर पाए तो लानत है हम पे कि हम उनका इंश्योरेंस नहीं कर पाए. So it is in a sense this giving back. I know that even when there were announcements for our soldiers, you've stepped up out there. This is the nationalist image also that has been created. You've done cinema a bit like that, the Kesari series, for example, and there was a belief that Akshay wants to do films that will define himself as a nationalist hero.
And at that period, there were even those who said, there were critics of yours who said, oh, वो तो Canadian citizen है, क्या nationalist बनेगा? How do you respond to that? Was it a conscious decision that I want to project myself as this nationalist? सर मैं कोई भी काम करता हूं कोई इमेज बनाने के लिए नहीं करता हूं. यार सर मत बोल यार. नहीं कोई बात नहीं है. We are the same age. आई नो, लेकिन फिलहाल आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं बोल लेता हूं. जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे सर बुला लेना. ठीक है. तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सर मैं कोई काम इमेज के लिए नहीं कर रहा हूं. मैंने कोई काम, बहुत सारे काम करता हूं, लेकिन कोई अपना नेशनलिस्ट इमेज बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं. ना मैं कुछ किसी काम के लिए कर रहा हूं. मैं काम करता हूं क्योंकि मुझे ठीक लगता है. मुझे लगता है ये करना चाहिए, ये कर लेता हूं. तो आपका दूसरा प्रश्न क्या था सर? Because you know this whole nationalist hero that you are being projected as, did you feel that that was something that you needed to put it out there because there was this criticism, Akshay is a Canadian citizen? मैं आपको वैसे तो मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि हाँ मैं कनेडियन, मेरा पासपोर्ट था, बिल्कुल था. क्यों था? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था मेरी 16-17 फिल्में फ्लॉप हो गई थी. मेरे पास काम था लेकिन मेरे पास लास्ट की 3-4 फिल्में बची हुई थी. तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ और तो देखो आदमी करता है, कुछ ना कुछ तो करता है. ऐसा नहीं है कि हमारे देश से लोग बाहर जाके काम नहीं करते, सभी करते हैं. तो मुझे काम मिल रहा था कनाडा में काम करने के लिए. तो मैं अपना सोचा था कि छोटा सा मेरा एक दोस्त था वहां, एक बिजनेस करना चाहता था. तो उसके दौरान मुझे पासपोर्ट का मेरे को एक मौका मिल गया, तो मुझे पासपोर्ट मिल गया. उसके बाद फिर कमाल की बात यह है, जैसे कहा अपने आप ही जिंदगी मुझे ले आई और मेरी वो जो 3 फिल्में जो मेरी रिलीज होने वाली थी वो तीनों की तीनों चल पड़ी और मुझे और काम मिलने लग गया. तो फिर मैं अपने दोस्त को बोला मैं वापस नहीं आ सकता हूं कनाडा में, तो तू कर ले, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं इधर ही रहूं. और उसके बीच में मैं ये भूल गया, मेरे लिए वो एक सिर्फ पासपोर्ट था. वो ये नहीं था कि मैं कनेडियन. मैं हमेशा हिंदुस्तान से मेरा पूरा नाता है. मैं हिंदुस्तानी हूं और हमेशा रहूंगा. फिर कुछ लोगों ने कोई मीडिया से आने लगे, अरे कनेडियन. मैं बोला ठीक है, आपको चाहिए मैं पासपोर्ट चेंज कर लो, ये लो. पासपोर्ट चेंज कर लिया, उसके बाद चेंज हो गया, खत्म हो गया. इसमें सोचने वाली ये मेरे को इतना समझ ही नहीं आता लोग इतना क्यों बोलना चाहते हैं. ठीक है यार, वो पासपोर्ट है, लेकिन इनकम टैक्स जो मैं भरता हूं, जैसे आपने कहा, मुझे इतने हर साल मुझे सबसे ज्यादा अवार्ड मिलता था, सबसे ज्यादा टैक्स देने का. वो सारा टैक्स मैं जब कनेडियन का था तभी भरता, इधर ही भरता था. मैंने कनाडा में आज तक एक टैक्स नहीं भरा, इधर ही भरता था. वो कोई नहीं बात करता. बात ये करते हैं कि वही बात है ना कि आदमी के अंदर 20 गुण अच्छे हों, लेकिन वो जो एक गंदा गुण है, वो जो एक कोई प्रॉब्लम है, उसको ही पकड़ो, उसको हाईलाइट करो, उसी को टीआरपी लगाते हैं, उसी को घुमाते रहेंगे. अरे आदमी की फितरत तो देखो, आदमी चाहता क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या कर रहा है, दिल से कर रहा है, वो नहीं कोई सोचता. लेकिन चलिए, वो भी मैंने खत्म कर दिया, वो भी मैंने दे दिया, ठीक है, खत्म हो गई बात. आगे ये जो मीडिया है, खास करके फिल्म की मीडिया, are you okay with it if they intervene in your privacy, try and take pics of you and Twinkle and the kids, or does it trouble you? Do you believe that the media should allow you to have your space? देखिए, मैं अभी एयरपोर्ट से उतरूंगा, कभी मेरी वाइफ साथ में होती है, मेरे बच्चे होते हैं, वो फोटो लेना चाहते हैं. एक फोटोग्राफर को करीबन न करीबन मेरी एक फोटो या मेरी वाइफ के साथ फोटो लेने के 3,500 या 4,000 रुपए मिलते हैं. अगर उसको मिलते हैं तो मेरे में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, मेरी शेरवानी में क्या परेशानी होनी चाहिए कि मैं खड़ा होकर फोटो ले लूं. मैं फोटो लेके उस बेचारे का घर चल जाएगा, वो खुश हो जाएगा और सारी फोटो ले जाएगा. तो इसमें कोई बुराई नहीं है. प्राइवेसी क्या नाम की, अगर आप बाहर निकले हो बच्चों के साथ, बीवी के साथ, तो प्राइवेसी किस बात की प्राइवेसी? So you think once you are in the film world, you've got to accept this as almost as a occupational hazard? No, it is not a hazard. अगर कोई फोटो नहीं लेगा तो सबसे ज्यादा हैजर्ड होगा, तो सबसे ज्यादा तंगी होगी ना. राजदीप जी, अगर आप जा रहे हैं, कोई पहचानेगा नहीं, आपकी कोई फोटो नहीं ले, तो प्रॉब्लम बड़ी होती है, उसमें प्रॉब्लम ज्यादा है. Now, I've often wondered, that's an interesting way you're putting it. Is that very important for a star who's
achieve the heights that you have. You sometimes wake up in the night at 4:30 जब आप walk कर रहे हैं बीच में garden में. नाइट नहीं, वो सुबह है. Okay, early morning walk that one day will the cameraman no longer be there, will the arc lights no longer be there, I've just got to keep acting for as long as I can. Will that day come कि no one will recognize me? Is that also one of the reasons why you want to do as many films, 4 films a year? Akshay Kumar, brand Akshay, must remain relevant. I love films. I want to do different kind of films. Whether it's action, comedy, tragedy, emotional, everything. I want to try everything. देखो सर, मुझे मौका मिला है. मैं यहाँ बाजू में ही चांदनी चौक में ही रहता था, तो मुझे मौका मिला है. और इतनी पॉपुलेशन है, उसके अंदर से कुछ लोगों को चांस मिलता है. तो आप समझते हो मैं छोड़ूंगा ये चांस? मुझे चांस मिला है, मुझे चूज किया है, लोग मुझे चाहते हैं, लोग मुझे मेरी फिल्म देखते हैं, मुझे 350 रुपए एक टिकट का 250 रुपए देके जाते हैं. मैं क्यों नहीं करूं? मैं कोशिश करके उनको जितना अच्छा देना चाहूंगा, मैं कोशिश करके देता रहूंगा. और एंड आई विल कीप ऑन वर्किंग. No, I will keep on working in this industry till they have to shoot me down. That's it. No one's going to shoot you down, sir. Shoot me down is एक कहावत है, मतलब not literally, but just कि I know. No. अच्छा, थोड़ा fun करते हैं यार. Let's lighten the mood. I'm going to do a bit of a Karan Johar on you with some rapid fire. Ready? Short, quick. Think of yourself as Twinkle for a moment. Think of what Twinkle would say. ठीक है? One film of yours you wish had received more appreciation. One film of mine which had received, which you had hoped would have received more appreciation. I think that would be Sangharsh. Okay. A role you regret saying no to. A role actually मुझे कोई भी रोल मिलता है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर लेता हूँ. I don't have any regrets, by the way. No regrets? No, I never have. In this entire journey, you've never had a regret? No. Nothing? No. The producers and directors have regrets that they have not taken me, but I don't have regrets. One actor today whose work you admire the most? Any actor whose work I admire the most, Bachchan Saab and Sanjeev Kumar ji and Mahmood. मुझे लगा राजेश खन्ना को भी बता देते बीच में. Well, I have learnt a lot from my father-in-law. What did you learn from him? I learned from him what not to do. Oh, that's a great answer. He actually, you know what He mistakes, was my original star for me. No, what mistakes he had done. He actually honestly sat down and he used to sit and tell me about the mistakes what he has done. He's the number 1 superstar. India has seen him. यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, I still remember कि मेरे father और my mother we used to, जब मैं बहुत छोटा था, करीबन 6-7 साल का था, तो हम कार्टर रोड से गुजरते थे, तो हम लोग खड़े रहते थे बाहर, आशीर्वाद के बाहर खड़े रहते, तो मेरे फादर मुझे अपने कंधे पे बिठा के दिखाते थे, वो देख राजेश खन्ना जी आए, देख वो देख, तो हम लोग देखते थे. सो ये देखिए फिर किस्मत की बात है, कहां से कहां आके. आई नेवर इमेजिन दैट हिज डॉटर इज गोइंग टू बी माय वाइफ. अरे वाह. Action or comedy? This you've answered more or less. Which comes more naturally to you? Sorry? Action or comedy? Which comes more naturally to you? I think comedy. You answer that. One director who pushed you the hardest as an actor? Mr. Rajkumar Santoshi ji. Your toughest co-star in an action sequence? Tiger Shroff, yeah. One habit from your early struggling days that you still keep and remember even today? What habit? One habit from your early struggling days that you still remember and it's almost like a life mantra. One habit that is getting up at 4:30, 4 o'clock in the morning. That habit, that is my mantra all my life. And that I would tell everybody, जल्दी सो जाओ यार, सबसे बढ़िया चीज है दुनिया में, उससे बढ़िया चीज नहीं है. 6:30 बजे से पहले खाना खा लो, सुबह जल्दी उठो और बस फिर काम पे जाओ. इससे बढ़िया जिंदगी में कोई चीज नहीं रखी. What time do you go to sleep? I go around कभी 9, 9:30 बजे, 9 बजे. मेरी न्यूज नहीं देखते हो? मैं एक्चुअली न्यूज ही नहीं देखता. पता है क्यों?
क्योंकि मुझे जिंदगी में सेहत अपनी रखी नहीं है एंड आई एक्चुअली मैं न्यूज मुझे सब पता होती है. मैं अगर आप कुछ भी पूछोगे तो मैं सब जानता हूं, पता करता हूं क्या है सुबह उठ के, लेकिन वो सब काम मैं सुबह करता हूं. सो मैं ये बता सकता हूं कि आपकी जो चीजें हैं वो मैं रात को नहीं सुबह उठ के देखता हूं. अभी आपने आपका जो इंस्टाग्राम में आपने डाला था वो रशियन ऑयल, रशिया हैज Yes. उनको सबसे ज्यादा 150 मिलियन. Yes. बराबर है. बिल्कुल. तो देखिए अभी डाला था आपने. Not bad. He just found out that the Russians are making $150 million So a day. that you put it. So I came to know. So I follow everything. I follow. you, sir. Thank you, sir. No, Thank thank you very much for telling us everything. Thank you. If not an actor, what profession would Akshay Kumar be? If I was not an actor, I would still be a struggling actor. Really? Yeah. The biggest change you've seen in Bollywood in the last 30 years? The biggest change. Yes. The biggest change, I think technology has changed a lot. A lot. Script and screenplay and the way of dialogues, deliveries have changed. Actors, the style of actors acting, that has completely changed. And obviously, the checks pe jo zeros lagte hain, that has changed a lot. What was easier to do? Make a super hit or interview Narendra Modi? Sorry? What was easier for Akshay Kumar? Blockbuster hit or interview Narendra Modi ji? Oh, well, that was a delight to interview him. That was a delight. And on the contrary, to make a hit movie is a very difficult one. One piece of advice you want to give young actors? One piece of advice I would always say is be disciplined, always come on time, and always be a producer's actor. Always take care of your producer because at your low time, they will be taking care of you. One actor who could play Akshay Kumar in a biopic? मतलब मेरा बायोपिक अभी बना दोगे आप? अरे आप पे अगर बायोपिक बन जाए, you can play it yourself if you want. I don't think so. It's a great story. Has anybody done that? It's a great story. No, but has anybody done played their own biopic? I don't think so. No. जब तक वो काफी बूढ़े नहीं हो जाते कोई नहीं करता. And I think I still need a little bit time. You need a little bit time. Yeah, a little bit. So I'll take my time to think about it. But it's a wonderful story that someone should one day tell the world. At the end of the day, Akshay, we are going to now try and do some fun. You've been an action hero. Well, I must tell you, I had lots of fun with you. So I think when we started doing an interview, we were always having fun throughout. But we're going to do some more fun. Okay. I have 2 left feet, so I'm not going to be able to dance. But I want to know from you what it takes to do dance moves. We also had a table, by the way, which we thought we would get you back to your martial arts day and get you to break a table. But I'm told you've done that in the past. Been there, done that. Okay. और मैं आपको बता रहा हूँ टाइम खत्म हो गया. आपने गन्ने की दुकान खोल दी है. वो गन्ने वाला नहीं होता, यहाँ डालो फिर निकालो फिर डालो फिर निकालो फिर नींबू और अदरक डाल के फिर डाल दो. मतलब जितना निचोड़ सकता आदमी निचोड़ लो. ऐसा है. एक लड़का अमृतसर का है who's made it big and made us all very proud. Abhishek, I want to say this. Both you and Sanju, I saw y'all and I saw what was happening in that game. We're all so very proud of you. I think you deserve a huge round of applause again for what you... एक बैट कही थी, जल्दी लाओ बैट. Akshay wants to learn cricket. Abhishek, you have to just show him that one shot that you play over extra cover. पकड़ोगे ना बैट? He's left-handed. कोई बात नहीं, मैं राइट से कर लूंगा. कोई बात नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. अगर वो लेफ्टी है तो मुझे राइटी को नहीं सिखा सकता. ऐसा कुछ नहीं है. वैसे तो राइट पे ही है. हाँ, okay. So you got to now show तेरा favorite shot, which is presumably what you do over extra cover or over point. और फिर वो right-hander try करेगा. तब देख ले. So how do you do it? कर ले अब. Now it's your turn. नहीं अब इतना मत बोल यार. Stance is not bad. Stance will give you 5. He comes from Don Bosco School, Ravi Shastri, Farooq Engineer. My name was there. I used to represent my school.
And your school team was better than my school team, that much I'll give you. So go ahead. Ithe marna, ithe. Arey wah. Look, I think we've had a great time. We've had two superstars coming in, and it's concluded what's been a wonderful India Today conclave. Just the sheer variety and diversity that Kali just spoke about has been the highlight. And we're ending with two people who made us proud, and both, importantly, are totally self-made. Abhishek, whose father is here, and Akshay Kumar represent, in a way, the best of India because they are driven by pure merit. Please give them, ladies and gentlemen, a very big hand. Akshay, thank you very much for doing this. We were only your co-stars, and thank you for doing this. Give them one very last round of applause, ladies and gentlemen. Thank you very much.